It's off the mic. It's on the mic. It's off the mic. It's on the mic. It's off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. It's on the mic. This is static voice off the mic. Hello. This is static voice off the mic. Hello. I think so. This is static voice off the mic. Hello. I think so. This is static voice off the mic. Hello. I think so. This is static voice off the mic. Hello. I think so. This is static voice off the mic. Hello. अभी नहीं आ रही हो. Hello. अभी नहीं आ रही हो. It's clear. I think so now it's clear. चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली गिटहब में साइन इन हो गया है. इस गिटहब में साइन इन हो गया है. सबने पहला तो लिख दिया था जो कि था हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिखेंगे हैप्पी बर्थडे. बर्थडे इसको रन करेंगे एंड देन हैप्पी बर्थडे आ जाएगा. इसको नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे. ओके, चेंज हेलो वर्ल्ड कोड टू हेलो बर्थडे. ओके डन. How it works, how shall you understand it? So fun. Fun is a word in the Kotlin programming language. Fun stands for a function. Function is a section of a program that performs a specific task. Okay, तो fun क्या है बोला गया इसमें. fun कोटलिन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसमें फन जो है वो एक फंक्शन के लिए स्टैंड करता है. फंक्शन सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. फंक्शन वो सेक्शन है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. अब फन मेन यानी कि इनडायरेक्टली हमें यहाँ क्या बोला गया है कि फन मेन. तो फन क्या है अभी हमें बताया, अभी मेन क्या है वो जानना है. तो मेन, ठीक है. सो मेन इज़ द नेम ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन का नाम है मेन. फंक्शंस हैव नेम्स. फंक्शन के नाम होते हैं ऑफ कोर्स. सो दे कैन बी कैनिश फ्रॉम इच. अच्छा ओके, फंक्शन के अलग अलग नाम होते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है, वो उसके लिए यूज़ होता है, और अलग अलग चीज़ें के जैसे कि नॉर्मली हम लोगों के नाम रहते हैं सबके. इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें. दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड मेन. ओके, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट और मेन फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड व्हेन यू रन द प्रोग्राम. एवरी कोटलिन प्रोग्राम नीड्स अ फंक्शन नेम्ड मेन. तो फंक्शन को एक मेन नेम की ज़रूरत है फंक्शन में. ओके, सो टू पैरेंथेसिस. इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. सो काम करेंगे हम सीखते सीखते ना. हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे. ओके, ये वर्ड डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा. गो विथ वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, यहाँ पे होगा एंड्रॉइड लर्निंग
ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी हम करेंगे, यहाँ जाएंगे, फन क्या होता है, सेकेंड इज फन, मेन क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स गो। Inside this parenthesis you can put information for the function to use. This inputs to the function is called arguments, args for short. You will learn about more arguments later. Okay, so इसके अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पुश, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म उसका आर्ग्स है। तो आर्ग्यूमेंट क्या रहे हम बाद में सीखेंगे, ऐसा बोला जाए। ओके, लेट्स लर्न अबाउट दिस लेटर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज़ है फन पैरेंथेसिस। अब इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। सो notice the pair of curly braces after the parenthesis inside a function is code that accumulates a task। अब जो कोड रहता है मेन, वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, दिस कर्ली ब्रेसेस सराउंडेड दोज लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, ओके। एक्चुअली हम काम करेंगे, ठीक है, और बाद में हमारा ये एग्जाम्पल होगा। हाँ, सो ओके, दिस लाइन्स ऑफ कोड प्रिंट्स हैप्पी बर्थडे टेस्ट। अब ये कैसे पता, प्रिंट एल एन हमने यूज़ किया, ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोट्स के साथ एक मैसेज लिखा है और वो मैसेज प्रिंट हुआ है। ठीक है, सो आई विल जस्ट दिस। इनडायरेक्टली ये क्या है, प्रिंट लाइन टेल्स द सिस्टम टू प्रिंट अ लाइन ऑफ टेस्ट। प्रिंट लाइन की ज़रूरत होता है ताकि हम कुछ जो प्रिंट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट प्रिंट हो। इनसाइड दिस parenthesis you put the text to be printed. Notice that the text to be printed surrounded cons. This tells the system that everything inside the quotation mark should be printed exactly as given. जो भी कोटेशन मार्क है ना, ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है एज इट इज़ प्रिंट होगा, यही है इनडायरेक्टली। और प्रिंट लाइन का ये मेन के अंदर ये फंक्शन है इसका कि ये इंस्ट्रक्शन देता है, प्रिंट लाइन का इंस्ट्रक्शन देता है सिस्टम एक आउटपुट दे, वो लाइन का जो भी लाइन उसके अंदर लिखी हुई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, जो कि एक्सटेंड योर प्रोग्राम। ओके, एक्सटेंड योर, प्रिंट मोर देन वन मैसेज। ठीक है, ग्रेट जॉब, you have printed one line of a text using the, however you can put as many lines of instruction inside the function as you need to get the task accomplished। ठीक है, just copy the line print line happy birthday and paste it into the two more times below it। make sure you pasted this line inside the curly brackets of main function। ठीक है, change the text printed and say Jhansi। okay, and change the other printed you are 25। let's go, let's just do this। indirectly ये करने बोला हूँ। so we can write actually, तो हम लिख ही लेंगे, काम करेंगे ये। ठीक है, सो अब बेसिकली हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाला है। सो अभी इनडायरेक्टली कैसा आउटपुट कैसा आना चाहिए, डिज़ायर आउटपुट होगा हैप्पी बर्थडे झांसी यू आर 25। सो अभी हम करेंगे रन और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगा, तो लेट्स रन इट। और ये देखो, वी कैन सी द आउटपुट एज वी वांट। सो नेक्स्ट,
ठीक है, सो अभी हमारा सही से हो चुका है. Let's go to the next here, dealing with errors. Making mistakes while programming is normal, and most tools give you a feedback to help you fix mistakes. In the steps, create a mistake to see what happens. Okay, in your program, remove the const text chancy so that it looks like this. Yeah, so of course अभी हम एक error कैसे आता देखेंगे. हम लोग basically करेंगे ये, and let's just run this. Unsolved restriction reference chancy, ये जो अगर हम ये करेंगे ये एरर हट जाएगा, बट क्या है अनसॉल्व. इस एरर हट गया, पहले इसमें अपना एरर आ भी गया. लेट्स सी ये क्या बोलता है. दिस मैसेज अनसॉल्व रेफरेंस टेल्स यू what the system thinks is the error in the code. Even if you don't know what the error message means, you may be able to figure out what's wrong. In the case of you know that print line instruction prints text, you learn early that text between the cons. If the text is not in content in cons, that is an error. Go ahead and add some cons back in. Run your program and make sure it works. Yeah, it does. हमने अभी देखा, हमने dealing with method. ठीक है. So dealing. Let's go to the next step. Okay, solution code. This is solution. This is the complete solution code you worked on. Yes. Next, summary is an interactive code editor on the web. You can practice with Kotlin programs. Okay, all Kotlin program needs to have a main function and function main. Use print line to function print and text inside it. Repeat the instructions. An error are marked red in the program. This is an error message in the output pane to help you figure out where the error is going to be causing it. Next, learn. ठीक है, सो हम लोग को ये एंड ये लिंक दी हुई है ना, सी दैट एंड प्रैक्टिस ऑन योर ओन. यहाँ पे we'll do this also. Let's check this out. ठीक है, सो जल्दी इस चैनल पे लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा क्या होगा, जो कि होगा लर्निंग ऑफ एवरीथिंग यूजिंग. ये मटेरियल तो पढ़ना पड़ेगा, काम का मटेरियल है ये. काम कर लेता हूँ ना रेदर देन, बट लिंक्स आप लोग विजिट नहीं करोगे. ठीक है, वोकैबुलरी बोला है तो हम एक बार तो रीड आउट करेंगे इन सब. Abstract class क्या होता है? An abstract class is a class that is marked with the abstract keyword in a Kotlin. An abstract class may have properties or methods that have not been implemented yet. In the case, initializing the abstract property of implementing abstract methods is up to subclasses. Because of this, you cannot instantiate an abstract class directly. Accessibility. I do want to read this, but it's going to take time. ठीक है, ये रेफरेंस के लिए हम इधर ही रखेंगे. ये तो हमने डेवलप किया ही है. नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या था, नोट. Change the print line instruction to print this. Run your program. What happens? In print line instruction just prints text without adding a line break. ठीक है, string fix this by /n. I didn't understand, but let's try this. So what we'll do is we will try this. It does the same. And what's the difference?
let's just okay, comma hello world, okay, SR. Or what about I just did this, ठीक है. और what if I did this slash n. So this is unexpected, okay. So what if I just did this slash n print हो गया. Or what if I this, it will show error, I think so. Yes. So I can only use this. See it later. Okay, I will try this. बाद में take a quiz. Let's take a quiz. Okay, what is a program? Which keyword is used to define function in fun is used to define? Okay, what is a program? A specific task, a tool that helps you write code. Series of instructions that computer executes and accomplishes action. Okay, which of the following do you need to create a Kotlin program that prints a line of text? So, which of the following you need to create a, ठीक है, पहले तो एक मेन फंक्शन we need curly brackets, we need to call this. ठीक है, you want what do you expect in this code? I don't know what array, don't know the what array string means. I think it's going to do one line. Okay, rather than doing that, let's just check it. What will this do? So let's just run this. What it did is it printed in two lines. Okay, two. What if I didn't use this? What happens then? Same. What if I just did use this? Same. So yeah, how do you modify the main function so that it prints 6 layers of cake, someone's fourth birthday? Value age 24, value player 5. Print cake candles age. Print cake top age. Print cake bottom. Huh? How would you modify this main function so that it prints a 6 layer cake for someone's fourth birthday? इसका फोर्थ बर्थडे है जिसको 6 लेयर ऑफ केक बनना चाहिए. 6 layer, set value to 6 layer. Yes, thing is each bola, so let's try this also. Let's try this also. We will go here, we will just yeah, let's just try this. Just check it.
ओके, ये रेफरेंस ही गलत है. हाउ? वैल्यू तो दी है मैंने. प्रिंट what I can do is let's try this. Okay, let's try this. See what happens. ये भी हटा देता हूँ. See what happens. It's showing me errors. Let's see. Okay, fun. Create a message. नेम क्या है? नेम है स्ट्रिंग का टाइप. लोकेशन स्ट्रिंग में और एज इंट में. एज इज नंबर, इसलिए इंट यूज होता है. प्रिंट एल माई नेम इज डॉलर नेम, मतलब स्ट्रिंग जो भी नेम होगा. सी वंडर हाउ इट विल गो. ठीक है, लेट्स रन दिस. नो मेन मेथड फाउंड. यहाँ पे मेन आएगा. फन मेन के अंदर फन क्रिएट मैसेज यूज कर रहा हूँ. क्रिएट मैसेज. I think this will. Let's see. Guided projects बाकी है. सर्टिफिकेशन बाकी. थिंग्स अपना पहला ओके नहीं. ये पैजेज हो गए. नेक्स्ट अभी
How do I go to dashboard now? ये हो गया student 2. Unit 1 हो चुका है, I think so. Okay, unit 1 ही चल रहा है अपना. Yes. Introduction तो done हो गया. Okay. अच्छा ओके, हाँ 2 string और एक integer. Sorry. Introduction तो done हो चुका है. Relevant environment. If this is your first time working with an IDE, you can think of it as being like a workshop with a lot of tools. These tools help you write your code and lay out how your app will look on the screen. It shows you a real-time preview of what your design will look like as you create each screen. Okay. And similar to how Google Docs checks your spelling, Android Studio checks for errors in your code as you type. It also gives you suggestions to help you code faster. And of course, as you create your app, you'll want to see it in action. Android Studio builds and runs your app, either on an actual Android device or on something called an emulator, a tool that allows your computer to simulate an Android device. Android Studio is an IDE because it integrates multiple developer tools together, doing a lot of the heavy lifting for us. Without it, the development process would be much longer and it would be easier to make all sorts of mistakes. As you create apps in this course, you'll learn how to use Android Studio and get plenty of practice with it. If you're curious, take a look at the linked Android Studio documentation. Let's go write apps! Allow me to. तो सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे फर्स्ट सेकंड. Yes. So basically, yes, we will install this on this PC, D drive, make a new folder. Drive fix इसके अंदर. New folder 6. Install this on new folder 6. Okay. So we can go, we can see next, we can browse to this, then we can do this, then we can create Android Studio folder. Okay, we can say next, we can say to install. अभी हमारा ये installing start. Yes, I have this. That's not my Mac. I don't have a Mac.
So first of all, install the commit. Okay, that was fast. So components. So